between Q3 and Q1, that is 625, 545. तो दोनों क्लासेस के बीच में डिफरेंस, तो इसमें क्या है, हमने तीन क्लासेस, 4 क्लासेस एक्चुअली क्रिएट किया है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, एंड रेस्ट ऑफ द डेटा आर इन फोर्थ क्वार्टाइल, करेक्ट? Yes, We sir. don't call it in call it as a fourth quartile. We just consider 1, 2, 3 quartiles, right? It is obvious when it is a quarter, that means we are dividing the whole in 4 parts. Quarter means that, yes or no? Tell me. Quarter मतलब क्या है? 4 है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, जो क्लासेस क्रिएट किए हैं वो क्लासेस के बीच में डिफरेंस क्या है? So interquartile range is nothing but the difference between the classes of quartile 1 and quartile 2. So first class is say this one 5625, another class is 545. So we consider the interquartile range is 80. That is also a measure of variability. Is it clear? Yes, sir. The variance is a measure of the variability that utilizes all the data. So it is based on the difference between the value of each observation xi and the mean. Xi for sample mean, mu is for population. So the variance is the average of the square difference between the each data value and the mean. So it is the value xi minus the sample mean square divided by the sample n minus 1. Similarly for the population, like in measure of location में हमने किया था sample mean and population mean. Similarly this is sample variance and population variance. For the entire population, use all where wherever it is possible. You can take the whole population. For the population variance, where you are using sample, take the number of samples here. Is it clear? Yes, sir. So we take the variance here. From variance, we calculate the standard deviation. Standard deviation is nothing but the root over of the variance. The root over of the variance. So for sample standard deviation, it is root of SS square, and for population standard deviation, we take is root of sigma square. This is sigma. This is sigma square, root of sigma square. Is it clear now? I hope standard deviation is being done in your school as well. हुआ है ना आपके स्कूल में भी है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? आपका जो मीन है, across the mean how much deviation we can observe, maximum कितना जा सकता है. That is what the standard deviation is all about. Correct? Clear, student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Keep responding. The last term is coefficient of variation. The coefficient of variation indicates how large the standard deviation is in relation to the mean. कितना standard deviation कितना mean से बड़ा है कि छोटा है. So the coefficient of variation is computed as follows. So S by X bar, that is your sample mean, or sigma by mu, that is your population coefficient of variation, the percentage. So the number that, let's take a numerical example. If the for the same data, the variance would be, that is sample mean of 70. So the variance would be summation of xi minus x bar, जो आपका मीन है वो आप हर एक वैल्यू से माइनस कर रहे हैं, स्क्वायर अप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इट बाय n minus 1. ठीक है, 70 minus 1, तो आपका वेरिएंस निकल रहा है. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 54.74. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वुड बी 54.74 डिवाइडेड बाय 590.8 मल्टीप्लाइड बाय 100. That is 9.27%. If it increases, ये जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब आपका वेरिएशन उतना, वेरिएबिलिटी उतना ज्यादा है. If it comes down to 0, that is the variation is very very less. Is it clear?
आप जितना बढ़ाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना बढ़ेगा, इसका मतलब है आपके डेटा में वेरिएबिलिटी उतना ज्यादा है, zigzag डेटा है. It signifies that क्योंकि आपका 9.27 से ऊपर अगर आप जैसे मान लीजिए जितना भी आप ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़ेगा, इसका मतलब है आपके डेटा का वेरिएबिलिटी बढ़ रहा है. करेक्ट? इज इट क्लियर? क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर रहे हैं मीन से, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा. So that you can understand that how it can coefficient of variation signifies the entire variability of your data. ठीक है. So part A हमने खत्म कर दिया chapter 3 का. Part B बाकी है. Next day we will take up chapter 3 part B. Any questions, students? I'm not listening much from you. Students, Sir, please respond. excuse me. Yes, sir. हाँ बोलिए. Sir, in Excel, what is the, do we have any ready-made formula for calculating standard deviation and these things? बिल्कुल है. हम चैप्टर 3B में करेंगे इसको. पार्ट बी में हम करेंगे इसको एक्सेल में. Okay, sir. Okay, sir. बिल्कुल करेंगे. आपको असाइनमेंट भी देंगे, आप एकदम तैयार हो जाएंगे इसके लिए. ठीक है. Any other question, students?